व्हाट अ डे ऑफ प्रीमियर लीग फुटबॉल यार। मतलब कल का दिन बर्नली विनिंग 3-0 से स्टार्ट हुआ, बर्नली विनिंग 3-0। उसके बाद भाई द बेस्ट मैच फॉर अ व्हाइल इन द प्रीमियर लीग, सिटी वर्सेस स्पर्स। नोबडी एक्सपेक्टेड द रिजल्ट, नोबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसा गोल फेस्ट होगा, इतनी कंट्रोवर्सी होगी मैच में। एंड स्पर्स एंडेड अप विनिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। 3 मैच लगातार हार के स्पर्स वॉन द मैच। मतलब प्रीमियर लीग समड अप इन अ डे। 112 दिन में पहली दफा सिटी हारी है, 14 विंस 1 ड्रॉ, तो और मतलब हार इट्स भी एक अमेजिंग हार। बिल्कुल, बिल्कुल, हार भी इतनी गज़ब थी। मतलब हमारे लिए तो बिटर स्वीट था एज़ यूनाइटेड फैन्स, बिकॉज़ सिटी, वी वांटेड अ ड्रॉ, बेस्ट रिज़ल्ट था, क्योंकि ड्रॉ से टाइटल रेस में तो चलो अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ड्रॉ से एटलीस्ट टॉटनहम बे पे रहती है। एक आर्सेनल ही इमीडिएट थ्रेट रहती, बट नाउ स्पर्स इज़ एज़ बिग अ थ्रेट एज़ आर्सेनल इज़, तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर द नॉर्थ लंदन टीम्स, क्योंकि दे आर आफ्टर आवर फोर्थ प्लेस। अभी जो हमारा, बिकॉज़ ऑफ द गेम्स प्लेड, वी आर अहेड। तो इस वीडियो में वी विल बी गोइंग ओवर द मैच दैट जस्ट हैपेंड बिटवीन सिटी एंड स्पर्स। एंड वील ऑल्सो डिस्कस जो लीड्स और यूनाइटेड का प्रीव्यू है, थोड़ा सा उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं उसके बारे में कि कि लीड्स और यूनाइटेड की राइवलरी है कैसे, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुई। बिकॉज लिवरपूल यूनाइटेड को सब जानते हैं, हर सीजन देखते भी हैं, बट लीड्स और यूनाइटेड की राइवलरी अभी 2 साल, मतलब 1 साल पहले ही वापस आई है इनटू द मेन स्ट्रीम। तो क्या है उसके बारे में, वो भी आपको हिस्टोरिकल एक बार बताएंगे बैकग्राउंड, बिकॉज सादिक भाई इज हियर। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सिटी और स्पर्स का मैच प्रोबेबली वन ऑफ द प्रीमियर लीग क्लासिक्स, और ये जो दिन गुजरा है, ये अगर लिवरपूल इज बैक इन द टाइटल रेस, क्योंकि अभी सिटी इज ऑन 63 पॉइंट्स, लिवरपूल इज ऑन 57 विद अ गेम इन हैंड। अगर लिवरपूल वो मैच जीत जाती है तो लिवरपूल विल बी एट 60 पॉइंट्स with a Liverpool versus City match remaining. So that will be a true 6-pointer for the league title. खैर, speaking about where we stand right now, हम लोग हैं in a fight for the top 4, जो कि as Achin just mentioned और ज़्यादा difficult हो गई है। Arsenal winning the game and जो Spurs ने किया, तो now United has got no way out but to defeat their historical bitter rivals Leeds United. We are traveling the Lancasterians to the Yorks. Achint, anything about the history that the people should know? हिस्ट्री तो यार, हिस्ट्री की तो इट्स जस्ट जस्ट स्प्रेड ओवर ईयर्स एंड ईयर्स। मतलब आप लोग इसका एक्चुअली प्रॉपर आर्ग्यूमेंट बना सकते हो कि लीड्स और यूनाइटेड की राइवलरी इज एक्चुअली बिगर देन द लिवरपूल एंड यूनाइटेड राइवलरी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, तो जितने भी भाई हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स के काफी लोग फैन होंगे, फैन भी नहीं होंगे तो काफी लोगों ने देखा तो होगा, एंड जिन्होंने नहीं भी देखा दे आर अवेयर कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टीवी सीरीज है जिसके पीछे लोग पागल थे। तो इट इज एक्चुअली लार्जली बेस्ड ऑन द वॉर ऑफ द रोजेस। और वॉर ऑफ द रोजेस एक बेसिकली इट वाज अ फाइट बिटवीन प्रेजेंट डे मैनचेस्टर एंड लीड्स, जो हुआ था 1455 से 1487 के बीच में हुआ था, 32 ईयर्स, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर्स इन इंग्लैंड हिस्ट्री। तो पूरी मैं इसमें आपको पूरी हिस्ट्री तो बताना बहुत बेतुका है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने देखा, इट इज बोरोज इन पार्ट्स फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन दैट। तो बेसिक बस बता दूं आपको, तो किंग एडवर्ड द थर्ड थे जो उस समय, जब वॉर शुरू होने से पहले, तो किंग एडवर्ड द थर्ड के जो बेटा था वो पहले मर गया था, उनके मरने से पहले मर गया था। तो उनके सक्सेसर की बात आई थी, बिकॉज बेटा मर गया। तो उन्होंने एक्चुअली कंट्रोवर्सी पूरी इमर्ज कहां से हुई कि किंग एडवर्ड थर्ड का जो सक्सेसर था ही वाज एक्चुअली किंग रिचर्ड द सेकंड। किंग रिचर्ड द सेकंड जब सक्सेसर बनाया, तो उन किंग एडवर्ड थर्ड के और भी बेटे थे, जो उनका मतलब सक्सेसर सन होता वो तो मर गया था, बट और भी बेटे थे, उन सब 3 बेटों को स्किप कर दिया था, एंड ही स्ट्रेट ऑन मूव टू एन अदर जनरेशन। तो एक जनरेशन पूरी स्किप हो गई थी। तो पूरी जनरेशन स्किप होने की वजह से ऑब्वियसली भाई आपको पता है रॉयल्टी में तो सब किंग बनना चाहते हैं, हर प्रिंस, हर कोई भी बेटा जिसका भी कुछ ना कुछ इतनी सी भी शेयर होती है क्राउन पे, दे आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर इट। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। तो तीसरे बेटे थे जो किंग एडवर्ड थर्ड के, उनसे पूरी जो लैंकास्टर वाली जो जनरेशन है वो इमर्ज होके आई, और चौथे बेटे से आई थी यॉर्क वाली जनरेशन, द यॉर्क्स एंड द लैंकास्टर्स। एंड यॉर्क, अब प्रेजेंट डे में देखो तो यॉर्कशायर में यॉर्क्स होते थे। यॉर्कशायर का लीड्स इज इन यॉर्कशायर एंड यूनाइटेड इज इन लैंकास्टरशायर। तो लैंकास्टर यूनाइटेड हो गया, और रेड रोज से रिप्रेजेंट होता है लैंकास्टर्स, एंड यॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाइट रोजेस। तो पुराने जो बैजेस भी थे क्लब्स के, उसमें मतलब लीड्स के बैज में एटलीस्ट देयर वाज अ व्हाइट रोज रिप्रेजेंटिंग देयर लॉयल्टी टू द यॉर्कशायर। दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री। सादिक भाई, तो आपके हिसाब, आप बिकॉज यू बीन फॉलोइंग यूनाइटेड फॉर सो लॉन्ग, you have experienced Leeds in the past, Leeds versus United. So how would you describe it? I will describe it as the last time when Leeds defeated United in a Premier League fixture was in 2002. It's been a while. Obviously, बीच में 20 साल लीड्स जो है वो रही नहीं थी इन द प्रीमियर लीग,
almost close to 20 years. और जब से Leeds has been back, अभी इनका दूसरा सीजन है, they have not been able to beat United, but last year's match we destroyed them in one, and we played a 1-1 draw where Leeds was at full strength, and that was an away game. But that 1-1 भी Ellen नहीं, Road 0-0 था एक्चुअली वो, मैं कंफ्यूज तो खुद भी, 0-0 ड्रॉ था वो, हमने गोल ही नहीं मारा था उसमें ना उन्होंने. exactly, it was a draw, and that was not in front of a full capacity Ellen Road. Ellen Road is one of the toughest places to play when it's on full capacity, especially when it's Manchester United traveling there. तो हिस्टोरिकली हमने रियो फर्डिनेंड लाए हैं लीड्स से लेके, हम उनका एलन स्मिथ लेके आ गए थे, कैंटोना. दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ लीड्स व्हिच सेंट देम पैकिंग आउट ऑफ द टॉप फ्लाइट ऑफ इंग्लिश फुटबॉल फॉर क्लोज टू 2 decades. But इस दफा when we are going there, again the scenario is very similar. We can shove them down into the relegation battle while also keeping our hopes, in fact strengthening our hopes of securing a top 4 finish. So this match is one of the biggest matches out there for United season and for any United fan as well. And definitely it's one of the big ones to watch out for, क्योंकि पिछले सीजन we were not able to experience it in full flow क्योंकि स्टेडियम में फैंस नहीं थे, एंड ओल्ड ट्रैफर्ड पे ऑब्वियसली ओल्ड ट्रैफर्ड इज अ मच बिगर स्टेडियम, वहाँ पे यूनाइटेड का सपोर्ट ज्यादा है, एंड एलन रोड कंपेयर करो तो बहुत पैक्ड इन स्टेडियम है, इट्स रिलेटिवली स्मॉलर एंड इट्स मोर, आप कह सकते हो ना, जो ट्रेडिशनल फुटबॉल स्टेडियम्स होते हैं जिसमें एवरीथिंग एक्शन इज वेरी क्लोज टू द फैन, एक्शन इज वेरी क्लोज टू द पिच, एंड आप यू कैन फील द एटमोसफियर वाली बात होती है. ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑब्वियसली यू कैन फील इट बिकॉज इट्स स्मॉलर, तो वो एक एनिमोसिटी है जो है आपको आप कर सकते हो उसको एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज वी हैव पोच्ड सो मेनी प्लेयर्स फ्रॉम देम, लाइक यू नो वन ऑफ देयर नोटवर्थी प्लेयर्स, एरिक कैंटोना की बात हो गई, आपने एलन स्मिथ और रियो फर्डिनेंड की तो बात की है, तो जो वी हैव बीन, यू नो, हमारी उनके ऊपर डोमिनेंस तो बहुत टाइम से रही है, एंड बस द ओनली रीजन इट्स नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड ऑन पार विद लिवरपूल इज क्योंकि लीड्स की जो सिचुएशन रही है, दे वर मैनेज सो बैडली, 17 साल से प्रीमियर लीग से गायब थे, they went to League One as well because उनका बहुत ही मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, बिल्कुल भी यू नो ऑफ द पिच प्रॉब्लम्स उनको कंज्यूम कर रखा था, तो ऑन द पिच वो फोकस ही नहीं कर पा रहे थे. बट इवन सर एलेक्स हैज डिस्क्राइब्ड इट एज यू नो एन इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर. जब हमने एफए कप में खेला था 2010 में, ही डिस्क्राइब्ड इट एज यू नो दिस एटमॉस्फेयर यू रियली हैव टू एक्सपीरियंस, एंड फैंस के बीच में वो एनिमोसिटी आप सेंस कर सकते हो, क्योंकि 70s में जब ये राइवलरी एक तरीके से इट वाज यू नो ऑन इट्स पीक, जो 70s में हुलिगनिज्म होता था, जो मतलब इतने वायलेंस होता था फैंस में, एंड यू नो फैन राइवलरी वाज यू नो एट इट्स कंप्लीटली ब्लडी, आप कह सकते हो मोस्ट अग्रेसिव एंड वायलेंट नेचर. तब लीड्स यूनाइटेड का एक सर्विस क्रू होता था, उनका नाम था, जो उनका सबसे डोमिनेंट फैन ग्रुप था, यूनाइटेड की रेड आर्मी होती थी. इन दो के बीच में इतने ज्यादा फाइट्स होती थी कि दैट यू नो they actually led to a lot of injuries and deaths as well. इतनी bloody fights होती थी. So that's all about the history though. मैच के फैक्ट, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द फुटबॉल, हिस्ट्री का कुछ रोल नहीं होगा, हिस्ट्री किसी को मैच नहीं जिताएगी. लैंकास्टर सब जीते थे बट यूनाइटेड कल जीते, कोई गिवन नहीं है. सो अगर मैच की बात करें, लीड्स आर मिसिंग अ लॉट ऑफ देयर मेन टीम. लीड्स कैल्विन फिलिप्स नहीं है, बैट्रिक बैमफोर्ड तो काफी टाइम से नहीं है, ही केम बैक देन ही वाज इंजर्ड अगेन. कैल्विन फिलिप्स हैज अ प्रॉब्लम एज वेल, सर्जरी जिसके लिए वो करा रहा है. तो ही वाज, जब हम पिछली सीजन 0-0 ड्रॉ किया था तो कैल्विन फिलिप्स वाज यू नो क्रूशियल फॉर देम, बिकॉज कैल्विन फिलिप्स ड्राइव्स देयर मिडफील्ड, एक उनकी बेड रॉक है मिडफील्ड का, जो उनके पास था नहीं. वेयरएज यूनाइटेड कंपैरेटिवली आर इंजरी फ्री, हमारे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड है बट नॉट एनी नोटवर्थी प्लेयर्स जो आप कह सकते हो हमारे स्क्वाड में खेलते. हीटन वगैरह हैं, मैटिच वाज आल्सो पार्शियली बैक, मतलब ही इज नॉट श्योर इफ ही विल स्टार्ट और नॉट. तो क्या लगता है, आई थिंक it will be an easier win for us, मतलब एटमॉस्फेयर भी हमने बात कर ली, but do you think we should be going for a good win? See, the first game जो सीजन का हमारा पहला गेम था, उस वक्त हमारी टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी नहीं आए थे. We had a different mentality on that game, and that game was I mean, again, we are calling our team one half FC, and that game was the embodiment of that. The first half was a KG affair. We went in, if I remember correctly, 1-1, and in the second half, we just turned on the show basically. Paul Pogba was in sublime form. I think we went in 1-0 and then we conceded early on in the second half. गोल मारा था काफी अच्छा. एलिंग, हां एलिंग ने मारा था. हां, जैसे हम अभी कर रहे हैं. But then उसके बाद we just turned on the show. Paul Pogba was magnificent that day, and Bruno had a hat trick. Paul Pogba had 4 assists, and even the legend Fred himself scored a goal. Pogba के assist पे. So, and उस गेम में कैल्विन फिलिप्स था, and what we are seeing is that United is being overrun in the midfield.
and Leeds not having a player of the quality of Calvin Phillips in the midfield is definitely going to be a benefit to United. But then again, we must not forget that in the last 4 to 5 weeks, probably the last game was the only one where we showed. Even in that game, the first half was pretty disastrous. So we were hopeful that we'll show up in the second half, and that's what we did. We But were I just think United clinical, will na? have Clinical थे हम. We weren't controlling the game, but we were clinical with our chances. exactly. And I think United will have to pull up their socks again, and this time for a full game, because Ellen Road is a wild place to play at. If anyone wants any idea to see what Ellen Road is, Amazon Prime पे जो Leeds United की documentary है, you can simply watch any single episode of that and you'll understand what a hostile place Ellen Road can turn out to be. We are looking a decent team at the moment. अगर stats की बात करें या advanced stats की बात करें तो we are producing a lot of XG, and as it is known that for a decent team XG tends to come to its mean one day and show what it is capable. मतलब आप XG पे आ जाते हो after a while. तो अगर हम यूनाइटेड अपने XG पे आ गई तो हमने आराम से 3 या 4 गोल we should be able to score in this game. But again, football is not played on paper and and results are not determined on a calculator. So वो तो है. I think United have to be up for a very tough fight, but I do see United pulling out a win. I think definitely because Leeds is wounded एक तरीके से. They don't have their main squad. Midfield इनका भी समय makeshift हो रखा है defensively. Though they have managed to make great comebacks against Aston Villa, considering कि उनको इतने players, उनकी पूरी bench is mostly from their academy. जो गेलहार्ट वगैरह भी नहीं available है इनके, जो आप कह सकते हो जो emerging players striker था जो उनका. They I think last match में थोड़ा unlucky थे एवर्टन के खिलाफ, though they ended up losing it by 4-1. But जो उसके रोड्रिगो के 2 chances थे, he took them so well. 2 पोल लग गए थे उसके, अगर वो चले जाते तो मैच कुड भी कंप्लीटली कॉम्प्लेक्शन बदल सकता था मैच का. तो यू कांट से कि एवर्टन ने जिस स्कोर लाइन थोड़ी डिसेप्टिव थी, तो आई वुड स्टिल कंसीडर लीड्स टू नॉट बी अ पुश ओवर. एंड स्पेशली वो डार्बी की बात होती है, कंसीडरिंग दिस इज यूनाइटेड की मेंटालिटी हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन टाइम एंड अगेन दिस सीजन. तो यूनाइटेड, क्योंकि मुझे याद है लेस्टर वाले मैच में जब हैरी मैगवायर को इतना क्रिटिसाइज कर रहा था उनका, मतलब द फैंस वर कंप्लीटली एट हिम लेस्टर के, तो हैरी मैगवायर डिड क्रम्बल अंडर द प्रेशर. तो आज बस मैं ये चाहता हूँ कि बिकॉज देयर विल बी अब्यूज, देयर विल बी दैट फैन की जो वो एग्रेसिवनेस होती है, हमारी टीम बस इट्स अप टू द टास्क मेंटली एंड वी डू नॉट क्रम्बल अंडर द प्रेशर. बिकॉज अगर हम एलन रोड को अपने आप को खाने देंगे ना, देन लीड्स कैन बीट अस इजीली, चाहे उनके पास प्लेयर्स हो या ना हो, एंड दे विल हैव ऑल द इंसेंटिव टू बीट अस. यार उनको पता है कि दिस इज देयर बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन. पिछले सीजन भी यही बात थी, इस सीजन भी यही बात थी, बिकॉज वी आर देयर बिगेस्ट राइवल्स. और भी राइवल्स है, चेल्सी के साथ भी उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी रही है, बट यूनाइटेड के साथ राइवलरी इज जस्ट ऑन अनदर स्केल. बट सिलेक्शन की बात करूं मैं आपसे, क्योंकि देयर आर, आई थिंक मोस्टली द टीम इज गोइंग टू बी द सेम. आई डोंट थिंक बैक फोर में वी वुड लाइक एनीबॉडी टू चेंज. जस्ट द फुल बैक एंड मतलब लेफ्ट फ्लैंक ही पूरी मेरे को आपसे डिस्कस करनी है. वैसे तो जेडन सैंचो स्टार्ट करता है विंग पे, बट अगर हम ट्रेडिशनली बात करें जो हमारे लेफ्ट विंगर ऑप्शंस हैं, वी हैव ऑन द पहले फुल बैक की बात करो तो शॉ एंड टेलेस की बात तो है ही, एंड यू आर नॉट अ फैन ऑफ शॉ एज आई नो, बट आई एम अ फैन ऑफ शॉ एंड यू विल प्रेफर टेलेस. एंड टेलेस की बात करेंगे और इलांगा की बात करेंगे. एंड आपने जैसे पोग्बा की भी रेफरेंस दिया था पहले मैच में जो हमारा लीड के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड पे था, उसमें पोग्बा स्टार्टेड ऑन द लेफ्ट. तो डू यू थिंक रैगनिक विल बी विलिंग टू डू दैट, और बिकॉज ही हैज मेड इट क्लियर कि मैं उसे मिडफील्डर की तरह ही देखता हूँ, नंबर 8 की तरह. तो आई विल बी सरप्राइज्ड इफ यू प्लेस हिम ऑन द लेफ्ट. बट लेफ्ट पे किसको कराओगे, रैशफोर्ड, इलांगा एंड पोग्बा एंड ऑन फुल बैक शॉ और टेलेस? देखो, आई वाज एनालाइजिंग हमारे पिछले जो गेम्स गुजरे थे, मैं उनको थोड़ा एनालाइज कर रहा था. तो डिफेंसिवली द इशू इज कमिंग अप नॉट जस्ट विद मैगवायर एंड नॉट जस्ट विद वरान. The defensive issues, they start from our central midfield going down to our fullbacks. So what I've seen why we are pushing Jadon Sancho suddenly on the left side is because we have had to play Luke Shaw in the last few games, or even Alex Telles is no big shakes playing on the defensive end of the ball. So Jadon Sancho is tracking back much better than what Marcus Rashford is doing on the left wing. So the issue usually used to start where Marcus Rashford and previously Mason Greenwood used to leave their markers off on each of the flanks. So our fullbacks were double teamed and they were confused who to mark. And that used to leave one free man who used to make the run inwards, which caused either Maguire or Varane to step up and overcome it. And our central midfielders not tracking back properly onto in the defensive phase allowed वही वाला इशू कि आप
ओवर कमिट कर जाते हो और फिर आप पीछे से रन खा जाते हो बिकॉज आपका फुल बैक ऑलरेडी डबल ऑक्यूपाइड हो गया और वो अपनी लाइन भी मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसमें आपको इश्यूज आ रहे थे. So with Jadon Sancho playing on the left, he tends to track back, and that tends to reduce the burden on our fullbacks and our central midfield, or rather lessen the burden on them and cover for them a little bit. Similarly, Marcus Rashford, although offensively is not very good or not as clinical or as proper of a winger or an inverted winger when he plays on the right, he does track back better. And similarly for Anthony Elanga's defensive work rate on either flank is pretty much the same. The issue I'm having is I would still continue if you're playing Luke Shaw on the left side as a fullback. I would still continue with Jadon Sancho. But if you play Alex Telles's track back pace is a little bit better than Luke Shaw. I'm not talking about his positioning, but his track back pace is better. And if you're playing Alex Telles, I would get the old system back where he was playing with Anthony Elanga. Because Telles and Elanga have a little bit of a chemistry on that wing, especially when it comes to off the ball movement. And knowing that we are playing Leeds, who will hit us back with quick counters through the wings and then through balls or crosses inside, we have to make sure that our defensive work on the wings is on point. Similarly, right side पे आपके पास है Dallo. So Dallo again defensively is not a very solid fullback, and I would not even be thinking about Aaron Wan-Bissaka at the moment. He's out of the Because picture अभी तो वैसे भी. He is good at one-on-one tackling, but he's not as good when it comes to positional play. And against a team like Leeds, as I mentioned, positional play is very important, especially on the defensive side of the ball. तो उधर अगर आप राइट साइड पे अगर आप डालो खिला रहे हो और इधर अगर आप इलांगा टैलेस खिला रहे हो तो आप राइट पे सैंचो को खिला दो. But Sancho has been pretty good on the left, so I'll keep Sancho there on the left and shift Elanga on the right side. Although offensively वो उसको थोड़ा लिमिट कर देता है, but overall game play में Elanga can sort of play on each of the wings. And I would still continue to use Marcus Rashford as a super sub, say after the 65th or the 70th minute, because honestly Marcus Rashford needs a break from starting games because I feel mentally he's not still fully back to where he could be. अभी भी वो he doesn't seem to be in the क्या कहते हैं in the flow of the game. That's what I would do. What I expect would happen is probably the same as what has been happening in the last few games. The formation will be the same. Pogba I don't see moving anywhere in the midfield against a pressing team like Leeds. A player like Pogba who is relatively press resistant. His ball carrying and ball completely holding नहीं है, but capacity. हाँ, against a press side which is very press heavy, तो he will get time on the ball a little. Exactly. और Pogba के वो जो छोटे passes होते हैं, especially with Bruno, sometimes with Scott McTominay, and especially with Jadon Sancho on the left wing. Yes. That would allow us to control the ball a little bit better. I'm not saying we would be amazing, but थोड़ा बहुत control आ जाएगा. And then we can obviously play balls with Ronaldo making the runs behind their centre backs, and their centre backs are not some of the most paciest centre backs in the league at the moment, and they are also woefully out of form. So that could be an advantage to us. As I mentioned, defensively, but we have to be very solid. We have to be मतलब completely switched on. आपने midfield की बात की, तो मैं midfield का भी हिसाब से पूछने वाला था कि you already mentioned Bruno that you know Pogba combines well with him, but it's very difficult that this happens that Bruno is dropped. But would you want to do that? कि आप Fred McTominay or if Matic is fit, you know Matic McTominay or Matic or Fred खिलाओ with Pogba? I think Pogba is a short starter for both of us. Would you want to give rest to Bruno before the Atletico match? See, in a game of this magnitude, which is so important for us in the league, मैं Fred को तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, especially given his last performance. I mean, we all thought that, especially after the first couple of games under Ragnick, we all thought that probably Fred would be one of the most important players in his system. But unfortunately, Fred doesn't show that level of, competence to play within the system. Competence, composure भी नहीं है. हाँ, he's not. He's like a jitterbug all around. And there is no coordination. I mean, if everyone is pressing in the wrong direction at the same time, the press can still work. But if three people are pressing are doing the right press,
but in different directions and with different outcomes in their mind, it's going to be a complete mess. तो एक कोहिरेंट गेम प्लान होना चाहिए पूरी टीम का. तो उसमें स्कॉट मैकटोमिने और अगर मैटिच फिट है, अगर मैटिच फिट है, आई वुड प्ले मैटिच, पॉग्बा एंड ब्रूनो. Otherwise, we'll continue with the same thing that Scott McTominay is doing. हाँ मतलब आई वुड अग्री विद यू, क्योंकि कंसिडरिंग यार देखो टॉटनम भी जीत गई, आर्सेनल भी जीत गई, एंड यू नो दे आर आर बिगेस्ट राइवल्स फॉर टॉप 4. वेस्ट हैम आज ड्रॉ कर गई, तो वेस्ट हैम इज यू नो एक स्लोली ड्रॉपिंग पॉइंट्स. अभी ऑलरेडी हम 2 पॉइंट आगे हुए थे वेस्ट हैम से, एंड इफ वी विन विल बी 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ वेस्ट हैम. तो वेस्ट हैम इज मतलब इट इज जस्ट शोइंग अ लेस्टर वाली थोड़ी टेंडेंसीज है कि कहीं कुछ मैचेस में दैट यू नो दैट लैक ऑफ क्वालिटी इन सम प्लेसेस इन द स्क्वाड दैट डज हर्ट देम, एंड दैट इज हैपनिंग टू देम. आई थिंक यूरोपा लीग कंटेंशन में तो वो डेफिनेटली है, बिकॉज दे हैव दैट प्लेयर्स इन फॉर्म. जैरेड बोयन वगैरह देखो, डेक्लन राइस देखो, so they have good players in form. But I think main rivals हमारे Arsenal and Spurs, and Arsenal and Spurs winning puts that pressure on us. And if we win, अभी भी हमारे चाहे मैचेस इन हैंड ज्यादा हैं, and we know I think 4 points ahead of Arsenal if we win, and same goes with Spurs as well. I think Spurs पे भी आगे, हम Spurs से भी आगे हो जाएंगे 4 पॉइंट से. तो that will be helping us because उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि तुम्हारे को पहले 4 पॉइंट ब्रिज करने, उसके बाद तुम आगे जाओगे. तो that is really important that we know win this match tomorrow. And prediction क्या होगा आपके जाने से पहले? मेरा prediction तो given the last game and given how Leeds has played so far this season, how vulnerable they have looked, I'm hoping for a clean sheet, but doesn't look like it, given that it's United this season. So a 3-1. 3-1 win मेरा would भी be बिल्कुल मेरे मुंह से आपने very छीन लिया. realistic. 3-1 मैं भी सोच रहा था, तो 3-1 दोनों का ही है. आई थिंक क्लीन शीट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द गेम. आई थिंक डार्बी वाला तो आ जाता है थोड़ा, एंड आई डोंट ट्रस्ट आवर डिफेंस दैट यू नो दैट वेल, बिकॉज अभी मैगवायर विल स्टार्ट, एंड मैगवायर की डिबेट हमने छेड़ी नहीं इसमें, बिकॉज फिर प्रॉपर पॉडकास्ट बन जाता. बट दैट इज ऑल, दैट इज आवर प्रेडिक्शन. दैट आपको हमने हिस्ट्री भी बता दी थोड़ी सी, हमने थोड़ी सी राइवलरी की भी बात कर ली कि क्या थी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो, तो एक तरीके से लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया हमने. And I hope you guys like this video. Thank you so much, Sadiq bhai, for coming on. And thank you. Anytime. It was just a pleasure. It was a pleasure. And आप सादिक भाई को आपने देखा ही होगा, वॉच लॉन्ग पे भी थे चिराग के साथ, उसके बाद ही जस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड जस्ट व्हाट अ डे ऑफ प्रीमियर लीग फुटबॉल. बस कल डिसअपॉइंट ना हो, हम यही चाहते हैं. एंड कल वॉच लॉन्ग भी होगा मोहक भाई के चैनल पे, सो मेक श्योर यू ट्यून इनटू दैट. आई विल बी देयर एज वेल, एंड वील सी यू गाइस लेटर. बाय बाय.